Good morning, students. Today, with the new chapter, right? Standard 7, chapter number 7. Weather, climate, and adaptations of animals to the climate. Part 1 of our chapter number 7. What is weather? First of all, what is weather? You can see the sample which is written in the newspaper. रोज का weather ऐसा लिखा हुआ आता है. What is weather? You can tell me. The day-to-day condition to the atmosphere at a place with respect to the temperature, humidity, rainfall, wind speed, etc. is called the weather of that place. What is weather? All these things are taken into consideration. Weather means the day-to-day condition of the atmosphere of temperature, humidity, rainfall, wind speed, right? इन सब के बारे में जो रोज की जानकारी है, everyday, day-to-day news, it is called weather. And the temperature, humidity, rainfall, these are all called the elements of weather. What is weather? The day-to-day condition of all these things, right? Temperature, humidity, जो रोज की रोज कंडीशन चेंज होती है उसको बोलते हैं the weather of that place. And the things which change, that is humidity, temperature, these are called the elements of the weather. The weather of a place changes day after day and week after week. That is why we often say that today's weather. Weather generally it is of day to day. वो रोज change होता है. So you can say that today's weather is too humid, or you can say the weather was warm last week, right? थोड़ा थोड़ा change रोज होता है. So the day to day change, that is called as weather. Here the definition is given. The day to day condition of the atmosphere at a place with respect to the temperature, humidity, rainfall, wind speed, etc. is called the weather of that place. These all things are called the elements of the weather. Right? Okay. So you understood what is weather? You can see the graph given. Graph showing the variation of maximum temperature during 3 to 9 August. 3rd को टेम्परेचर 26 था तो 4 को नीचे आ गया, right? It came to 23, 24. Again it went up to 25. Then it came to 22. So this is the day-to-day change. So you can write like this, that on 3 it was 26, so on 4 it was 23.5. On 5 it was again 25. So now you can clearly understood that weather is the day-to-day measurement, right, of the elements. Okay. When you see the weather written, you will see the maximum temperature and the minimum temperature. So what is the maximum temperature? Maximum temperature means पूरे दिन का सबसे ज़्यादा गर्मी जितनी टेम्परेचर तक थी, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर था, दैट इज़ द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे. द मिनिमम टेम्परेचर जनरली रात को ही होता है ना, जब सबसे ज़्यादा ठंडा होता है एटमोसफियर. द लीस्ट टेम्परेचर नोटेड, इट इज़ कॉल्ड द मिनिमम टेम्परेचर. मैक्सिमम टेम्परेचर दोपहर को जब बहुत ज़्यादा धूप होती है तो सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर जो मेजर होता है दैट इज़ द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ दैट डे. एंड रात को जब सबसे कम टेम्परेचर होता है दैट इज़ द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द डे, राइट? नाउ
climate. What is climate? Weather देखा day to day, right? Change. Now climate, the average weather pattern taken over a long time, say 25 years, is called the climate of the place. Long period weather का pattern लेते हैं, उसका एवरेज निकालते हैं, that we called climate. समझ आया डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट? वेदर चेंजेस डे टू डे और क्लाइमेट बहुत लंबा रिकॉर्ड वेदर का निकालते हैं, उसका जो एवरेज निकलता है दैट इज कॉल्ड द क्लाइमेट. टू अंडरस्टैंड यू कैन सी टेबल 7.2. जनवरी से दिसंबर तक का वेदर निकाला है, राइट, ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. Also you can see in table 3.3 it is of Kerala, Thiruvananthapuram. Information about the climate. The mean temperature for a given month is found in 2 steps. First we find the average of the temperatures. Second we calculate the average of such average temperatures over many years. कैसे करेंगे? पहले तो yes मंथ का एवरेज निकालेंगे, देन सारे मंथ्स को मिला के उसका एवरेज निकालेंगे, एंड यू कैन फाइंड दैट क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस. ठीक है ना? देखो जैसे इधर है, सी मार्च इट इज 3.8 एंड मैक्सिमम इट इज 13.6. व्हाट यू विल डू? यू विल ऐड बोथ दिस 13.6 plus 3.8. The answer you get, you will divide it by 2. That is the average of March. उसी तरह सारे मंथ का एवरेज निकाल लिया, फिर क्या करेंगे? उन सबको प्लस करेंगे and you will divide it by 12. The answer you get will be the climate of the year. आई बात समझ में? So these are 2 steps to find the climate. Okay. You can easily say by looking this table that there is a difference in the climate of Jammu and Kashmir and Kerala. We can say that Kerala is very hot and wet in comparison to Jammu and Kashmir. है ना? You can say that. So, similarly for the western region, for example Rajasthan, you will see the high temperature. But during the winter you will see the least temperature. So this region receives very little rainfall. This is a typical desert climate. It is hot and dry. What is the climate of desert? It is hot and dry, where there is heavy rainfall. So that is the northeastern India. It receives rain for a major part of a year. It is called, there is a wet climate. जहाँ डेजर्ट है, जहाँ धूप ज़्यादा है, रेन कम है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है? हॉट एंड ड्राई. And when there is a more rainfall, there the climate is wet. So you can say the climate of northeast India is wet climate. है ना? क्योंकि साल में ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे, तो उसका क्लाइमेट है वो वेट होगा. Climate and adaptation. What is adaptation? Yes, the special characteristics or a habit which are formed by animals to survive in their habitat is called adaptation. है ना? जो स्पेशल चीज़ है जो उन्हें उस तरह के टेम्परेचर में रहने के लिए हेल्प करती है, that is called adaptation. What is adaptation? Some special features or habits which help them to survive in the conditions which they live. It is called habitat.
सो जैसा इट इज कॉल्ड एडेप्टेशन. सो जैसा क्लाइमेट है वैसा एडेप्टेशन करना पड़ता है ना. अगर ठंडे क्लाइमेट में रहने वाला प्राणी है एनिमल, राइट, एनिमल विच लिव्स इन अ वेरी कोल्ड क्लाइमेट, जहाँ पे ठंडी सबसे ज़्यादा होती है, तो वो एनिमल्स कैसे होंगे, उनके ऊपर उनकी स्किन होगी वो एकदम फर वाली होगी, राइट. इट वुड हैव अ हैवी फर ऑन इट सो दैट it can protect it from cold. So this is their adaptation. Now desert animal you can say camel. वो कैसा होगा, उसको एक स्पेशल क्वालिटी है ना, इट कैन स्टोर वाटर इनसाइड इट बिकॉज डेजर्ट में जल्दी पानी नहीं मिलता है. सो उसको दैट इज द एडेप्टेशन ऑफ द कैमल, राइट. उसको एक अलग सी उसकी फीट में एक देयर इज अ स्पॉन्जी फीट सो दैट इट कैन वॉक ऑन द सैंड. डेजर्ट में सैंड ज़्यादा होती है तो उस पर चलने के लिए उसकी एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है, स्पेशल फीचर है उसके पास. उसके पाँव में वो स्पॉन्ज होता है कि वो रेत पे आराम से चल सकता है. सो दीज आर ऑल एडेप्टेशंस अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट. इफ द एनिमल इज इन अ हॉट क्लाइमेट उसकी उस तरह की एडेप्टेशन होगी. इफ इट इज ऑफ कोल्ड क्लाइमेट तो उसकी उस तरह की एडेप्टेशन होगी, राइट. So there are different types of adaptations according to the climate in which they live, right. Okay, the polar region. First is the polar region. The polar region present an extremely which type of climate? Hot climate. These regions are covered with a cold climate, snow, and it is very cold for most part of the year. Polar region mostly covered with snow. For 6 months the sun does not set up the poles, right, and the other 6 months the sun does not rise. उधर कैसा है, 6 महीने धूप ही धूप है और 6 महीने ठंड ही ठंड है, स्नो. In winters, the temperature can be as low as -37 degree. Can you imagine? -37 degree, 0 degree पे तो आइस हो जाती है. So -37 means animals living there have adapted to these severe conditions. उनकी adaptation हो गई है वैसी जगह पे. What is it? We can see the polar bears and penguins. Polar bears have white fur, so they are not easily visible in the snowy ground. It protects them from their predators, है ना. उनको जो कलर है उनका वाइट फर एकदम, तो वो स्नो के साथ मिक्स हो जाते हैं so that nobody can see them and harm them. It also help them in catching their prey. छुप सकते हैं आराम से स्नो में ताकि वो अपना शिकार ढूंढ सके. To protect them from extreme cold, they have 2 thick layer of fur. उनकी बॉडी पे 2 thick layers of fur was there so that it protect them from cold.